टाइम फ्रेम का डिफरेंस आता है एक प्रोडक्ट मैनेजर का और एक प्रोडक्ट लीडर का. प्रोडक्ट मैनेजर बहुत स्क्यूड, बहुत ग्राउंड लेवल पे सोच रहा होता है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए सोच रहा होता है. प्रोडक्ट लीडर का काम होता है बड़े टाइम फ्रेम पे सोचना. प्रोडक्ट मैनेजर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है उसके स्प्रिंट पे, उसकी इंजीनियरिंग पे, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे, डिजाइन पे, टेस्टिंग पे. बट प्रोडक्ट लीडर को वो कंट्रोल मेंटेन करना है, बट विद इन्फ्लुएंस. Hi everyone, today we have Mr. Salman Shaikh with us. He is Associate Director of Product at Pharmeasy and previously holding a decade-long experience in product management. Today we have a lot to learn because as I have worked with Salman, I know communication is one of the core skill which he says that can get you done anything. And that's how he transitioned from a product manager to a product leader. And I have witnessed that journey. I have learned so many things from him. We have discussed this, that we wanted to do this session for almost a year. And today I'm like feeling so grateful, so happy that I'm talking to Salman. So please welcome Mr. Salman. Hey, thanks, Himanshu. Thanks for those kind words. But I think, equally happy and equally proud that you actually started this initiative. And I was looking forward to it. And I previously thought, okay, you already started it and you didn't invite me. So I was kind of feeling bad about it. No, actually, Yeah. it is not possible if I start and you are not there. I also wanted to pass this wisdom you have to the world today. I definitely jump into your journey. That how did you break into product for the very first time from your category role? Immediately after my engineering, I started as a pre-sales business analyst role at a very small firm, 100 people firm. वहाँ पे I saw e-commerce firsthand. It was 2012, 2014 का time. I saw e-commerce happening first time. I tried to do my own startup in the meanwhile. One fine day, I wrote to Kunal Well, hey boss, I am doing e-commerce, but I don't understand it much. I want to work closely with you. Within 5 minutes, he responded. Within 1 week, I had a job with Snapdeal as a category marketing manager. Okay. And I would say it was a life changer. Otherwise, I wouldn't have got into this industry, or wouldn't have I seen this industry, e-commerce boom, all this unicorn companies, working with them closely. I wouldn't have got into it had I been very reserved in not asking Kunal, or being not to try. If I was afraid of failure or getting no response from Kunal, then potentially I would have I've not seen all these things or the kind of growth I have. So I would say first quality as a product. This was kind of a quality. What do you do as a product? Like you don't fear to try. You want to try. Curiosity. Curiosity. You want to try it. At least give it a Yeah. shot. And Yeah. if it works, doesn't work, we'll see it. Loss nahi hai. So we got into it. We saw. I saw category marketing manager using a lot of tools, website, app, वगैरह. But as my role over there, I was more into data and participating in marketing वगैरह. But I did not have control on the product. उससे realize हुआ. उससे मुझे क्यों और वो हो रहा था, नहीं ये प्रोडक्ट डिटेल पे जैसा दिखना चाहिए, नहीं चेकआउट एक्सपीरियंस मेरा फर्नीचर का ऐसा होना चाहिए. फर्निशिंग कैटेगरी देख रहा था. तो और उसमें मतलब एज अ बाय लुकिंग एट डेटा मुझे बहुत आ रहा था कि अरे नहीं मेरा पीडीपी ऐसा होना चाहिए, मेरा फर्नीचर कैटलॉग ऐसा, कैटलॉग हैवी कैटेगरी है तो उसका इमेजरी ऐसा होना चाहिए, 360 डिग्री इमेजरी. और प्रोडक्ट नहीं सपोर्ट करता था बहुत सारी चीजें फॉर माई कैटेगरी. तो उस टाइम पे ऐसा मतलब आई वाज फीलिंग शैकल्ड. यार मैं प्रोडक्ट में होता तो शायद से मैं आइटरेट करके कुछ नई चीजें कर लेता. बट वॉट एवर आई कुड डू बाय एनहांसिंग माई कैटलॉग, वो सब चीज हमने की है, बहुत सारी चीजें. Then my break came into product. Now I was trying very hard to get into product, नहीं हो रहा था because chicken and egg story होता है product managers के साथ में. So from Snapdeal category marketing manager, I was trying. उस टाइम पे कूपन दुनिया था, a lot of new क्रेड भी था. उस क्रेड स्टार्ट हो रहा था, या कुणाल शाह की पुरानी कोई कंपनी थी, कल्ट वगैरह थी. तो उसमें I was trying to get into all those things, but नहीं हो रहा था because they wanted product experience. पीछे का वो था नहीं हमारे पास. वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम जियो वाज फॉर्मिंग अ ब्रांड न्यू टीम फ्रॉम ऑल ई-कॉमर्स बैकग्राउंड, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ईबे, शॉपक्लूज, एंड फलाना टिमका, पीपीएम एंड एवरीवन. एंड उसमें आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट टीम who was responsible to create Jio.com.
e-commerce website that you see right now, my Geo and e-commerce, Geo.com e-commerce. So I got part of that. That was my first break. What do you think is the primary difference between an IC product manager and a product leader? I'm looking at the larger roadmap, 9 महीना, 6 महीना, 12 महीने का roadmap, strategy क्या है, vision क्या है, हम किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा. बट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर, एज एन आईसी, आप उस क्वार्टर की या उस महीने की, उस स्प्रिंट की चीजें पे फोकस ज्यादा कर रहे होते कि ओके मेरा प्रोडक्ट या फीचर कैसे फॉर्म हो रहा होगा. तो वो डिफरेंस विजन का, रोड मैप, टाइम फ्रेम का डिफरेंस आता है एक प्रोडक्ट मैनेजर का और एक लीडर, प्रोडक्ट लीडर का. प्रोडक्ट मैनेजर बहुत स्क्यूड, बहुत ग्राउंड लेवल पे सोच रहा होता है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए सोच रहा होता है. प्रोडक्ट लीडर का काम होता है बड़े टाइम फ्रेम पे सोचना. प्रोडक्ट मैनेजर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है उसके स्प्रिंट पे, उसकी इंजीनियरिंग पे, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे, डिजाइन पे, टेस्टिंग पे. बट प्रोडक्ट लीडर को वो कंट्रोल मेंटेन करना है. दैट आई एम जस्ट समराइजिंग इट. कंट्रोल मेंटेन करना है बट विद इन्फ्लुएंस. कोई ऑप्शन नहीं है, कंट्रोल करना ही है. Agar if I fail to control it, then I lose it. I completely agree to it that how they are looking at a smaller time frame to versus a longer time frame you are looking. And some people call it like a 10,000 feet view to 30,000 feet view you are thinking. So like, and they are very execution focused, and then you are on a planning focus. So the one very good line I heard somewhere that as a product leader, you are trading off depth to the breadth. So you are because focused on a breadth now. And you start losing little bit of a depth on a particular feature, but you're okay with that because you know that some other product manager is looking into the depth, and that's where the team building activity comes, according to me. अगर product manager नहीं होते तो क्या होते? So maybe something in creative space, maybe in something in photography space, or I've done event management also in my career. उसमें भी photography भी करो और event manage भी किया, मतलब event पूरा setup किया, उसमें खुद की photographer खुद बना हो. So maybe in that some space I would have done, or very recently I've explored, gardening, so something in plants or something. I'm thinking of setting up a nursery with unique plants and selling and doing those things. So maybe. And I think it's an evolving process, yeah. Yeah, both are very interesting professions, and I'm sure like this will also change when you do more things. You come across more things because you're naturally curious. So how your normal day looks like? Okay. So basically I start my day quite early, 6:37. I go to play tennis for 1.5 hours. Then I come home, take a shower, have breakfast, read some top news, start watching news on YouTube. Then take a breather space for half an hour, 1 hour. I need that space for myself. I then go and water my plants. उसको पानी वानी डाल के कटिंग वटिंग करके थोड़ा मेरे को एक वो मिलता है, zen मिलता है, that zen space मिलता है मुझे दिमाग में. Then around 9:30 I would come down on my iPad and then start looking at numbers. I would start my day, and I think every product leader does it, and every aspiring product leader should do it. Start your day with numbers. उस तरीके. And what numbers would do is numbers would help set up agenda for my week or for my day. कि अगर कुछ फटा दिख रहा है तो मुझे पता है I should be the first person. सब में ये चाह होनी चाहिए, I should be the first person to spot certain anomaly और सब कुछ फटा है. कोई आके नहीं पूछना चाहिए मेरे को. तो एक वो उस चीज की वजह से I would see my top of the funnel, my conversion funnel, my bottom of the funnel, my post order experience. How is everything looking like? My L0s and L1s I would look at. I would set the agenda. फिर कहीं पे भी मेरे को कुछ 3-4 चीज 5 चीज मिल गए तो फट you assign it to people कि बॉस ये देखो सर्च में ये देखो, रेको में ये देखो, डिस्कवरी में ये देखो, चेकआउट में ये देखो. इस तरीके से you start assigning work from that point. And when you do that early in the morning before you start getting meetings वगैरह, so it sets the agenda for the day. Because you, as a lot of times in our space right now, when we are working remotely in a hybrid way, we don't control our day anymore. Our days are controlled by meetings. So whatever 1 hour, 2 hour of quality time you can get anywhere throughout the day, later half in the day, I don't think we get. And then you start getting into the meetings, you set up agenda, you go, you do those meetings. That is BAU for me. Okay, progress should be there, part of the meetings. And by end of day, around 1.5 hour, again, I keep for myself to clear off emails. I do not like to go into the next day having 100 emails or unanswered emails.
I might not be good at responding the emails throughout the day, although my bosses do it. I imagine I don't understand how do they do it the entire day, because I want to concentrate when I'm replying to somebody. I want to concentrate, understand ke kya hai, kya problem hai, and respond it. So my closure comes from कि okay, what all things are open, or you want to answer to people or assign work again at the later end of the day. You assign it and then go. Only then I get peace. उस तरीके से then I go off to have my dinner and a walk, and उस तरीके से to end my day. Love the thought that how you starting a day with the numbers, and that is very important. As I'm doing YouTube and I'm doing more of a content writing on LinkedIn, the first thing I wake up next day and see how my previously built content has done, or Performed, who हाँ. is watching, who is not watching, what is the working, what is not working, and that really helps me to decide how I want to move forward. This is something, Correct. it's very natural to all of us as humans, and we all are on social media, we are doing this. Like is the first biggest invention which has created and help people to look at the analytics in form of numbers, how many likes. What is product management according to you? I think it's a creative process. Okay, there are certain aspects of it's a spectrum, huh? Product management is a spectrum, and I think large part of that spectrum is creativity. Can you think creatively out of the box about your platform or the product, or that feature, or a function that you're representing or you're looking after? Can you think out of the box and identify the problems, and can you solve it? So it's a creative process. It's a creative thing. I would say it's a creative skill, product management. Apart from this, product management also requires certain types of project management skills. मतलब there is an aspect of project management while doing product management, जिसमें you give work to engineering, you follow up, you get things done out of design, multiple threads. डिजाइन हो गया, engineering हो गया, testing हो गया, and you do it. तो एक people management, product management aspect आता है वहाँ पे, relationship management का एक बहुत बड़ा aspect आता है. But what is product management? मतलब I think it's I would say it's creativity, because I love to say that. And why I see this, I also implemented it. I mean, one of my ex bosses told me कि भाई ये PRD का ये format है, इसको PRD को इसी format में लिखने का. And I, as you know me, I am no follower of rules. Okay, I do not like to follow a format of rules, because creative process को तुम format नहीं कर सकते. तुमको एक product problem लिखना है, तो तुम अपने तरीके से एक creative तरीके से, मतलब it as I told you, it's art. Product management is an art. Okay, with some supported somewhat with some science and some commerce to it, but it's mainly art. How do you manage people is an art. How do you think or visualize a future of your platform or a feature is an art. Okay, and how do you bring it to fruition with engineering, design, technology, everybody working in tandem? Again, it's an art. So it's art, I would say, to answer to your question. What is this is so beautiful to hear that you mentioned that it's an art. I was listening to a podcast by Ranveer Alabadia with Zakir Khan, and Zakir Khan mentioned कि the people who have reached the pinnacle of their career, like Messi or Ronaldo and Sachin Tendulkar, Dhoni, these people are artists. ये स्किल नहीं है. ये स्किल तो मतलब एक स्किल, हार्ड वर्क सब हो चुका. जिस लेवल पे वो ऑपरेट कर रहे हैं, इट्स एन आर्ट. दे बिकेम आर्टिस्ट, एंड वहां पर एक मैजिक होता है. So I think what you are saying, product management as a creative process, when you look at it in a way that you are solving some interesting problems, you're figuring out. It's an art. It becomes so natural to you. For some people, it's very natural. For some people, they acquire these skills and then they do it. I think I very much agree to it, and it's amazing to think it that way. How was your interview process at Pharmeasy? For a leadership role, without mentioning designation and budget and anything, they said we are looking for some leadership folks to join our team and would like to talk. So I said I was an SPM, so I said why not? Everybody wants to get into the leadership thing. So I said okay, let's talk. So I had my first initial conversation with HR. HR looks at general background check, मतलब क्या कर रहा है, does it really fit into what he's been doing, it fits into the JD requirement of the line manager वगैरह. Then I had my conversation with the line manager. What line manager assessed me, मतलब उनका इंटरव्यू कैसा था, उन्होंने मेरा बैकग्राउंड समझा. ओके, कि मैंने क्या क्या लाइफ में 3 4 5 प्रोडक्ट, फिर उसमें से एक आइटम उठाया और उसमें मेरे को वाई पूछने, मतलब ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू व्हाई, कि ये ऐसा क्यों किया, ये वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों किया.
मतलब मैं अपने जियो के टाइम के आई माय a lot of in a lot of interviews ना मेरे जियो के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस खुल जाते हैं एंड आई थिंक माय बॉस स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड कि ये डेप्थ पता है कि या सिर्फ ये फेक रहा है काइंड ऑफ मतलब इसने एक्चुअल में सच में डेप्थ में काम किया है या क्या है. सो ही स्टार्टेड आस्किंग व्हाई, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों किया, इसे कैसे पता कि ये चल रहा था या नहीं चल रहा था. ही स्टार्टेड लुकिंग एट दोज एस्पेक्ट एंड देन लाइन मैनेजर वांटेड टू बी कॉन्फिडेंट कि भाई इसको प्रोडक्ट आता है, इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना आता है, डिफाइन करना आता है, इसको बनाने आता है, एग्जीक्यूशन आता है. तो वो बेसिक्स है. 101 मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट 101. And then as a product leader, then he started assessing me. Uh, I mean, these were very generic questions. How do you manage? How do you assess that your team is doing well? Product product folks in your team are doing well. And at Ola also, I was managing a team of like three APMs kind of directly and indirectly. I was working with them. So how do you manage performance of your product managers? Now, this is a very tricky question. You cannot always manage a team of a performance of your product team basis KPIs or metrics. There is some software aspect like how healthy is your backlog वगैरह वगैरह. So there was this round where he understood my thought process कि how would I assess performance of my team वगैरह. उन्हें समझ में आया. Sarovar was my boss at Pharmeasy who eventually ended up hiring me. So yeah, he understood it. Then there was another round with product team जिसमें there was a product similar level product person who came with a product design question related questions wherein वो पूरा 1 घंटा we spent in, so I think solving 2 problem statements in that. Then there was a round with engineering, and engineering leader wanted to understand कि how in depth I know engineering. मुझे API समझ में आते हैं. If I created a certain feature at that this person deep dived on my 1mg experience. So if I created certain feature, then he wanted to understand कि इस स्टेप पे क्या हो रहा था, इस स्टेप पे कौन सा API कॉल होता है, इस स्टेप पे क्या हो रहा था, डेटा कैसे आ रहा था, कहाँ से आ रहा था, इस स्टेप पे ये क्यों था, ये आगे क्यों नहीं था, ये पीछे क्यों नहीं था. तो दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मेरे को टेक्नोलॉजी समझ में आता है, किस तरीके से API या सीक्वेंसेस API के सीक्वेंसेस चल रहे हैं. दिस पर्सन वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये मतलब इसको डेप्थ में है क्या, समझ में आता है. ही डिड नॉट एक्सपेक्टेड मी टू बी एक्सपर्ट एट अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, बट एक हाई लेवल पे एक बंदे को डेटाबेस, API स्ट्रक्चर, कॉलिंग मतलब इनपुट आउटपुट या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझ में आता है कि नहीं आता है, वो दैट पर्सन स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट. एंड देन आई हैड वन कॉन्वर्सेशन विद बिजनेस हु केम टू इवैल्यूएट कि मुझे धंधा समझ में आता है कि नहीं, मुझे मार्जिन्स, सेल्स, मुझे एबिटा, कैटेगरी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, और अगर मुझे कोई धंधा बढ़ाना है, ऑर्गेनिकली बढ़ाना है, ये सब क्वेश्चंस मतलब उसमें आए थे मेरे इंटरव्यू में. इसके अगर बिना स्पेंड करे मुझे धंधा बढ़ाना ऑन प्लेटफॉर्म्स, एंड व्हाट काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स विल आई डू, हाउ विल आई इंक्रीज विजिबिलिटी फॉर माय कैटेगरी ऑन द प्लेटफॉर्म. बिजनेस वांटेड टू अंडरस्टैंड कि किस किस्म के जुगाड़ या किस किस्म के मेरा थिंकिंग प्रोसेस कैसा है. कि मैं बहुत बार ऐसा होगा ना, ग्रोथ लाना है तो पैसे खर्च दो, ग्रोथ आ जाएगी. बट नहीं, बिजनेस को चाहिए कि ऑर्गेनिकली फीचर बिल्ड करके वो आधा परसेंट, यू एज यू से ना 1% PM बेटर PM पर डे. तो वो 1% से कैसे तुम क्या कर सकते हो जो 1% वो एक्स्ट्रा आ जाए. तो बिजनेस वांटेड टू अंडरस्टैंड दैट. सो ये पूरा हुआ. फिर देन देयर वाज अ कल्चरल फिटमेंट थिंग वेयर HR लीडर of the org came in, understood how do I operate, and I had a lot of smaller stints in my career. So this person, HR person, came in to understand primary reasons why I left my last 2-3 organizations. And that was very important. And those answers, you need to be extremely genuine. Whether you are not happy with engineering, whether you are not happy with the bureaucracy on the previous organization, or whether you are not happy with the quality of business or there is a funding dry up happening in the previous organization, you have to be extremely honest and you need to be quite rational. Fake karke, there's no point faking to people whom you're going to work in future. Correct. उस तरीके से. So all these things happen. And then I was able to crack my thing. उसके बाद में I think there was compensation and stocks वगैरह का उस तरीके से, and role के क्या मिल रहा है वगैरह. So I think that's the easy part and everybody knows about it. Obviously, it's not an easy part, that the last negotiation parts are very difficult. We will keep it for some other time. But yeah, with pretty much heavy. But you as a product leader, I'm sure they're getting into such depth.
So and you are also hiring PMs at Pharmeasy, right? You also hire PMs, you take interviews now. What is your decision making factor when you hire PMs in your team? Intent is something which I try to understand कि ये fake है, ये genuine है. I think genuineness I try to assess for a person कि कितना genuine है. Capability and skills तो क्या है, एक आप सिखा सकते हो बंदे को, ठीक है. जरूरी नहीं है, मतलब एक बंदे की इंटेंट और इंटेग्रिटी आप नहीं सिखा सकते. वो नेचुरली आती है, वो रहती है, ठीक है. दूसरा है अप्रोचिंग पर्सन्स. when you throw a lot of questions to PMs, their approach matters a lot. We are not looking for the right answer. We both of us have been through that journey, right? We are not looking for the right answer. जो कुछ भी बकवास क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार प्रोडक्ट के इंटरव्यू में. बट इसमें वो सामने वाला कैसे संयम दिखाता है, मतलब पेशेंस टू अंडरस्टैंड कि क्या पूछा जा रहा है. उसी से मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होती है कि ओके आप ये पूछ रहे हो कि आसमान में कितनी फ्लाइट्स है, तो उसको मैं लेट मी टेक अ स्टेप बैक कि कितने एयरपोर्ट है, कितने लोग है, पॉपुलेशन है, मैं आराम से पूछता हूँ आपको. पर्सन हु आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ना इज आई थिंक person who is trying, he's not jumping to conclusion quickly. He's trying to assess कि अच्छा लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, क्यों कर रहे हैं, इसका गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. अगर बंदा ये सब समझ के कैन टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन टुवर्ड्स अ सोल्यूशन तो बहुत बना लेंगे. एज आई टोल्ड यू पहले भी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट करेक्टली अगर आदमी सोच ले, तो व्हेन यू थ्रो अ क्वेश्चन, कितने संयम से वो सुनता है, समझता है, सवाल पूछता है, addresses tries to understand the requirement and the problem statement and creates a problem. एंड देन क्योंकि आप वो 40 मिनट या 60 मिनट के इंटरव्यू में करेक्ट सोल्यूशन पे कभी नहीं पहुंच सकते. आप वहां पे असेस कर रहे होते हो अप्रोच, कि बंदे में अप्रोच है क्या. अगर वो अप्रोच है और करेक्ट इंटेग्रिटी और इंटेंट है बंदे में, देन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. बाकी किसी की देख एनालिटिकल स्किल्स किसी की अच्छी होती है, किसी की डिजाइन स्किल्स अच्छी होती है, किसी की प्रोडक्ट मैनेजमेंट, किसी की स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, वो सब तो हर कोई सेम नहीं होता ना, तो सबका अलग अलग कुछ साइज होता है, वो मैनेजेबल. बट अगर ये दो चीज मिल जाए ना तुम्हें, करेक्ट इंटेंट और करेक्ट पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट जंपिंग टू कंक्लूजन, मतलब गोइंग स्लो, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड गोइंग स्लो, अगर ये मिल जाए तो आई थिंक that's how I tried. I have given hundreds of interviews, Himanshu. Okay, hundreds of interviews, and I failed. I take my failure as badge of honor. Yeah. Okay. I never regretted. I never took it like too hard कि यार इसने रिजेक्ट कर दिया मेरे को. A very young PMs where I've interviewed have rejected me. मतलब 2-3 साल 4 साल वालों ने मुझे रिजेक्ट किया when I have 7-8-9 years of work experience. But मुझे फेलियर फील नहीं हुआ. मैं सोचा कि भाई कैसे सीखूं इससे. What did I go wrong? And when if you are a very high self-aware person ना, you understand कि where did you screw up. Okay. And then you improvise on it. So never, I say, my advice to young PMs is don't fake it, be honest, be patient, understand what is being asked. Right answer is not something that you want to jump to, but the approach you want to show to the person that I can think कि इस तरीके से I can if I ask this right questions, then probably I can reach to that correct answer. And yes, that's about it. Correct. Very reasonable, I think. And spending time on a problem is the most important thing I also learned in my experience. It's very natural and very intuitive to jump on a solution because all the calculation you are doing in a back of a mind, आपके दिमाग में चल रहा होता है कि अच्छा कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर कैसे डायरेक्टली आप सॉल्यूशन सोचने लग जाते हो. बट अगर आप थोड़ा सा और उसको डिफाइन कर पाओ चीज़ों को, तो बहुत ईजी हो जाता है. एंड आई फेल्ट इट मल्टीपल लोकेशंस. लोग ना गलत सवाल पूछने लगते हैं बिकॉज ये द टिप दे हैव अंडरस्टूड. सब पीएम्स को समझ में आ गया सवाल पूछना सही है, सवाल पूछूंगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है. कि सवाल पूछ लिया, अब सामने वाले को लग गया मैं तो प्रॉब्लम फिगर आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ. तो इट्स अ गुड स्टार्ट दैट यू हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस. आपने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया, बहुत अच्छा स्टार्ट है, बट दिस इज नॉट द फाइनल एंड. सही क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है. धीरे 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 वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिस दिस मोर, आपको मिलेगा. आप वो प्रैक्टिस से आ जाएगा. व्हाट्स योर गो टू रिसोर्सेज when you are indecisive about any product decision? Interesting. So I have a habit of going through a lot of Harvard Business Review case studies,
Okay, a lot of medium articles. I mean, still till today, I read how to write a PRD. बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हम पीआरडी हमारी ऑग में लिखे जा रही है या हमारे पीएम लिखे जा रहे हैं, तो वो करेक्ट लिखे जा रही है या इसको और बेहतर क्या कर सकते हैं, यार दुनिया में लोग बेहतर क्या कर रहे हैं, यार स्पॉटिफाई, फेसबुक, मेटा, ये सब कंपनीज में लोग काम करते हैं ना, ये लोग कुछ अलग ही करते हैं। तो हम कैसे सीख सकते हैं? मीडियम 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 वगैरह पे लॉट ऑफ गुड फोक्स, गुड ऑथर्स, दे पब्लिश। सो आई जस्ट लाइक टू रीड कि अलग क्या कर रहे हैं। नाउ इट्स अप टू मी कि मैं पिक एंड चूज क्या करता हूँ, बट एटलीस्ट मैं रीड करता रहूंगा तो आई एम अप टू डेट कि क्या चल रहा है। दूसरा, वी ऑल्सो तो एचबीआर से व्हाट आई, सो एचबीआर एज अ रिसोर्स, वो मेरे को है ना लीडरशिप स्किल सिखाता है, टीम मैनेजमेंट सिखाता है, अलग चीजें सिखाता है। वो मेरे को प्रोडक्ट मैनेजमेंट नहीं सिखाता, वो मेरे को बिजनेस सिखाता है, लीडरशिप, टीम मैनेजमेंट, ये कि हाउ डू यू डील विद certain type of team members, how do you deal with certain type of stress environment, you know, all those kind of things, how you take a foot back, or you know, you become more aware कि कैसे डील करना है टीम के साथ में, लो परफॉर्मिंग टीम, हाई परफॉर्मिंग टीम, वो सब चीजें एचबीआर बहुत बढ़िया दिखाता है। तो आई वुड सजेस्ट people should at least, you know, take certain kind of a subscription or a shared subscription among couple of people and at least read that. It really helped me. I have some, you know, actual magazines HBR का पूरा ऐसा 5 6 8 ऐसे पढ़े हुए पुराने, मैं मतलब 2012 14 से पढ़ता था। दूसरा, आई वुड से in order to improve my product management वगैरह, medium is the best resource which I come across. There are lots of company blogs like booking.com का blog है, Gojek का blog है, ninja card का blog है। बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज जिनके इनके खुद के ब्लॉग पोस्ट वगैरह है, देयर इंजीनियरिंग, देयर डिजाइन, देयर प्रोडक्ट इज राइटिंग गुड आर्टिकल्स, है ना। I don't think we need to pay anywhere to learn product management. That is very clear to me in life. I have not learned it. I have not paid anybody. I have rather got paid to learn product management. So, so I would tell this to everybody: do not pay or do not do any kind of crap course वगैरह कहीं पे कुछ। rather, पूरा दुनिया अब संसार भरा हुआ है, एक्सपोनेंट है। I still go and understand कि एक्सपोनेंट पे किस किस्म की केस स्टडी सॉल्व की जा रही है, बिकॉज उससे तुमको कुछ चमक में आ जाता है कि कुछ उन लोग कोई केस स्टडी बात कर रहे हैं, तो तुम यू कैन गो टुमारो एंड यू नो पुट दैट टू यूज। और ऑल्सो हिमांशु, व्हाट वी डू, yeah, like you and me, there was our one ex colleague Priyanshu who works for Swiggy, ऐसे बहुत सारे पीएम्स के साथ जो फ्रेंड्स है, इनके साथ है ना, हम बकवास बात नहीं करते जैसे हम भी करते थे। हम बकवास बात नहीं करते, हम बात करते थे कि भाई ये काम में मैं यहाँ पे स्टक हूँ, मैं आई नो आई केम टू यू स्ट्रेटेजी पे आई एम स्टक, हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग स्ट्रेटेजी। सो देयर आर कपल ऑफ पीयर्स जिनके साथ ना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि वो इस डीजेएफएम क्वार्टर में क्या कर रहे हैं, एसॉन ए क्वार्टर में क्या कर रहे हैं। अगर इफ आई एम स्ट्रगलिंग विद अ सर्टेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अ गोल सेटअप या ऑब्जेक्टिव सेटअप फॉर अ क्वार्टर वगैरह, तो उनसे समझता हूँ कि उनकी कंपनी में क्या चल रहा है। तो उससे क्या थोड़ा उनको आइडिया मिल जाता है, अच्छा इंडस्ट्री में भी ये भी, इन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए और नहीं चले, या इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स दे आर थिंकिंग अबाउट एंड वी कैन आल्सो थिंक अबाउट, यू कैन थिंक ऑफ सम सिनर्जीज। तो वहां पे, सो आई थिंक टॉकिंग लाइक द प्लेटफॉर्म दैट यू आर बिल्डिंग, दिस इज आल्सो वन ऑफ द ग्रेट वेज टू एक्सप्लोर कि हाउ डू वी इन आवर टीम दैट वे। I agree. Like, I'm sure there are a lot of people who are listening to you, and at this moment, if they wanted to become PM, or if they're already PM, or if they even are not PMing, but the art of thinking like a product manager can get you in the shoes of a user and start thinking about the market dynamics, start thinking about the competition, and then solving that eventually to make money for your business and creating something beautiful out there, which can actually create delight also, or can solve a core problem. So a lot of things can happen around that. I think that's a very right way when you're talking about the resources. So in like, this is one resource, but you said Medium, great resource. I personally love it. And HBR, I'm sure whoever don't have the access, they should go to at least look at the Instagram pages and YouTube They to have some free from them. articles for the month. I think They have 3 to 5 free articles per month they have. I think people should go and they're just read it. amazing. They're amazing. Yeah. I always, if I want to learn about anything related to conflict, negotiation, they have amazing content out there for that. Correct, Thank you correct. for sharing Absolutely. that. One last thing I want to ask you in detail, that as which we have started our conversations from. So you value relationships, right? You value
relationships over everything else. You say कि analysis सब ठीक है, हो जाएगा सब. But where this came from and how you get this implemented in your own team that बाकी लोग भी ये चीज समझ पाए equally. I think I've been really blessed. Okay, in my last 10 years, I have worked with really good bosses. Okay, and these bosses, I can still, today, even having not spoken to a couple of them for 7, 8, 9 years, I can just pick up the phone and just call him, and I know that person will answer. That's relationship. एक है ना स्लाइड था, हम क्लाइंट्स के लिए हम मैं मेरा करियर आई स्टार्टेड विद इन प्री सेल्स बिजनेस एनालिस्ट का रोल. उसमें है ना एक बॉस ने बनाया था, आई विल नॉट टेक क्रेडिट फॉर इट, बट उसमें एक स्लाइड था जिसमें है ना हम क्लाइंट को ये समझा रहे थे कि वी आर अ गुड कंपनी वगैरह 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 सब कुछ. और उसमें है ना एक फोटो था ताजमहल का. आई एम शेयरिंग इट, आई हैव नेवर शेयर्ड विद एनीबॉडी एंड आई एम शेयरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. उसमें है ना ताजमहल का ऐसा ऊपर से एरियल फोटो था एंड उसमें ऊपर लिखा था एंड वी बिलीव इन बिल्डिंग रिलेशनशिप्स दैट्स लास्ट्स. Tajmahal is an epitome of relationship which everybody knows, right? And it's stuck. Like what you want to do with clients. If you have a good relationship, तुमको धंधा मिलेगा. If you have a good relationship with your customer, तुमको धंधा मिलेगा. If you have a good relationship with your retailers, your farmers, मतलब धंधा होना ही है. Synergies बनेगी बनेगी. Everybody आज की मार्केट में नीचे जो फिजिकल वर्ल्ड है, डिजिटल भूल जाओ, फिजिकल वर्ल्ड है पूरा रिलेशनशिप पे चलता है. लोग उधारी पे पैसा किसको देते हैं, किससे लेते हैं माल, रिलेशनशिप पे. सो रिलेशनशिप का तो सवाल ही नहीं उठता कि रिलेशनशिप को तुम इंपॉर्टेंस मत दो. बाकी सब अभी बहुत सारी कम्युनिटीज होती है, इजरायली जूविश कम्युनिटी होती है, दे वांट टू डू बिजनेस विद इन देम. ओके, दे हैव अ सेक्युलर इकोनॉमी. व्हाई? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न. दे ट्रस्ट ईच अदर, दे हैव रिलेशन, दे वांट देयर कम्युनिटी टू ग्रो. Similarly, all of us, you, me, we have a very small community. We want all of us to grow. So that is why we want to maintain that relationship. Along with friendship, whatever friendship we have, that's separate. But a good relationship it is invaluable. It takes you to the moon and beyond. I would tell you. I will give you certain examples. If you have a good relationship with the engineering, even if your PRD is fucked up, even if you don't write a good requirements document and you have a good relationship, they will stand for you and they will tell you, okay, they will tell you to write a good PRD, okay, or they will cover up for you if you have a good relationship. If you have a bad relationship, they will screw you badly in front of everybody. Okay. If you have a good relationship, designer will not tell you, यार इसको time लगेगा. Designer, आप कभी अर्जेंट में आए ना और रिलेशनशिप है. Also, I learned this from one of my ex bosses at Jio. हमारे पास है ना इंजीनियरिंग टीम नहीं होती थी डेडिकेटेड, हम रिलेशनशिप पे काम करवाते थे. उनका रैपो ऐसा था, वो जाके लोगों के साथ ऐसा बैठ के चाय पी के आते थे. ओके, तो फिर बाद में मतलब पूरा कॉन्वर्सेशन कर लिया, काम की बातें नहीं की, गए मिल के आए किसी को, पूरा कॉन्वर्सेशन कर लिया और एंड में लास्ट के 2 मिनट में बोला कि यार वो सलमान है ना, वो सलमान को मैं भेजूंगा, उसके पास कुछ काम है ये छोटा सा, वो करवा देना. मतलब गया बंदा, बात करके आया 1 घंटा, बट लास्ट के 2 मिनट में से उसने प्लग किया कि काम क्या है. पहली जो 98% कॉन्वर्सेशन था वो सिर्फ जनरली टू नो कि तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, शेयरिंग. वहां पे रिलेशनशिप बन गया. अब जब उन्होंने काम असाइन किया ना सटली लोगों को, इट्स नॉट बीइंग श्रूड और इट्स नॉट बीइंग दिस थिंग, इसको रिलेशनशिप कहते हैं. ठीक है. अब जब उन्होंने कहा ना कि सलमान आएगा तो काम कर देना उसका, तो जब मैं गया तो भले मेरे पास रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके बॉस की और मेरे बॉस की वो बात हो गई थी ना कि भाई कर देना, अक्षय का बंदा आएगा तो कर देना, तो वो वहां पे काम हो जाता. बहुत सीखने को मिला. मैं पहले बहुत झगड़ालू था, लोगों से बहुत झगड़ता था. ठीक है. यू विल टेल कि आज भी हूँ, नहीं ऐसा नहीं. I can vouch for that, yeah. But I have learned it from you. Relationships you really need to value, and it takes you to long places. I got a couple of jobs I just got because one of my bosses who worked in certain company where I worked together, although I fought with him over there, but he understood okay what work I was doing and there was a good relationship apart from work. So then he got me there. So yeah, relationships take you to places. There's no hiding about it. Correct. And I think, you know what, because I have worked with you and I have seen you, so I actually got
inspired when I see you handling the way you handled your team, the way you are dealing with the people, and the way you are getting things done, irrespective of the limited resources you have. So it's only because you value the people more than the task. And that's Correct. extremely impossible, extremely important thing in the world. It's the most important thing in the world. इससे ज्यादा important कुछ नहीं है. लोग रह जाते हैं. There is a transactional versus relationship वाला एंगल. मुझे हम्म. अगर किसी से काम करवाना या काम है, मैं हम्म. बंदे को फोन करता हूँ, तो हम्म. मैं ना सबसे पहले उसको पूछूंगा, भाई किधर है, हम्म. क्या कर रहा है, खाना खाया, आज का हम्म. दिन कैसा था, या सुनना हम्म. है, मेरे को काम करवाना है, तेरे एक हेल्प हम्म. चाहिए मेरे को. हम्म. तो इफ आई आस्क सो मेनी थिंग्स एंड दैट पर्सन अंडरस्टूड ना कि इसने मेरे से, एक होता है, देयर आई हैव सीन सर्टेन बॉसेस कि भाई ये किधर है, फोन उठाया, पूछा भी नहीं कि मैं खाना खा रहा हूँ, कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, कि भाई ये किधर है, ये मेरे को अभी ना 2 मिनट में भेज देना. हम्म. नाउ व्हेन यू गेट दिस काइंड ऑफ अ बिहेवियर सामने से ना, यू रिजेंट टू वर्क. हम्म. You don't want to work for such a person जो रिलेशनशिप या तुमको वैल्यू नहीं करता. Correct. बट रादर व्हेन आई कॉल्ड माय इंजीनियर रात में 12 बजे भी ना, कि भाई क्या किया, दारू पिया, मजा आया, आज सैटरडे कैसा था, वगैरह वगैरह, यार मेरे को है ना ये चाहिए, एक डेटा दे देना, अगर पॉसिबल हो तो दे देना. दिस थिंग ना, इट डज वंडर्स. मुझे फॉलो अप नहीं करना पड़ता. Correct. It's very natural to human being. सबके पास नहीं है. You have a हाँ. habit कि when you call, you ask about it because you care about the other person कि यार हो सकता है वो खाना खा रहा हो सकता है वो कुछ और कर रहा हो. And once that person will be free, अगर मैं उसको तब के लिए बोलूंगा तो वो करके देगा जरूर क्योंकि वो था उसका करेक्ट. भी. लेकिन when some people don't care, obviously that's the reason there is a difference between a great leader and a करेक्ट. manager. I want to talk about Pharmeasy now. Where do you see the potential of the Pharmeasy growing in the upcoming years? What we are doing in this industry overall? आई वुड टेल यू, सी 2012 से 15 के बीच में जैसे कि फूड का इकोसिस्टम था, फूड डिलीवरी का, जोमेटो Hmm. का, स्विगी का. लास्ट 2 3 4 साल से दिस इज द फेज फॉर फार्मा इकोसिस्टम. अभी फार्मा में इफ यू डोंट हैव अ clear cut Zomato or Swiggy like player right now, till now, Hmm. probably. Hmm. Okay, Hmm. because that is still getting formed. यहाँ पे ना बहुत सारे रीजनल प्लेयर्स है, लाइक 1mg is heavy in Gurgaon. Hmm. I'm ex 1mg, so I know Hmm. कि they have Hmm. a heavy influence in Gurgaon Hmm. location. Hmm. Pharmacy is based out of Mumbai. Apollo, I don't know Apollo कहाँ का है, but हाँ Pharmacy is based out of Mumbai, so शायद से उसका यहाँ पे प्रेजेंस ज्यादा है. They have Hmm. acquired Thyrocare, तो Thyrocare is known across Mumbai वगैरह Hmm. रीजन में. तो यहाँ पे ना रीजनल स्ट्रेंथ्स बहुत है लोगों में, अभी तक कोई एक डोमिनेटिंग प्लेयर निकल के नहीं आया है Hmm. मार्केट में. और Hmm. ये बहुत ही ट्रिकी बिजनेस है, बिकॉज अपनी इंडियन ऑडियंस को जहाँ पे जो फ्री मिलता है या ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, लोग उधर चला जाता है. तो Hmm. सब पूरा गेम अभी बचा हुआ है कि हम कैसे रिटेन करें Hmm. ऑर्गेनिकली, बिना Hmm. पेड करें. Hmm. व्हाट वी एक्चुअली एंडेड अप डूइंग इज कि हमारे पास कस्टमर आता है, डिस्काउंट सारे यूज करता है, देन इट दैट कस्टमर बिकम्स सच अ रिपीट कस्टमर कि उसको डिस्काउंट नहीं मिलता है, फिर वो गायब हो जाता है प्लेटफॉर्म से, फिर वो 1mg के पास चला जाता है. फिर जब Hmm. हमारे पास वो गवर्नमेंट यूजर हो जाता है, फिर हम उस पर ऑफर फिर लाते हैं, फिर खर्चा करते हैं, तो फिर वो वापस हमारे पास आ जाता है. बट ये Hmm. बिहेवियर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खराब है. Hmm. सो हम, आई थिंक एवरीबडी स्टार्टिंग टू फोकस के डिस्काउंट बिहेवियर से तुम वैल्यू पे कैसे लेके आओ, कि Hmm. टाइम में जल्दी में डिलीवरी करवा पाओ. स्पेशली एक क्रॉनिक यूजर बेस को टारगेट किया जाए, कि डायबिटीज यूजर बेस है, थायराइड वाला यूजर बेस है, वुमेन वाला एक सेगमेंट है, एल्डरली वाला एक सेगमेंट है, कुछ वो सेगमेंट्स में तुम ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे करवा पाओ ऑन योर वैल्यू प्रोपोजिशन, कि हम सबसे जल्दी करते हैं, हमारे दाम पे नहीं, डिस्काउंट पे नहीं, हम सबसे अच्छा करते हैं, हमारी डिलीवरी रिलायबल है, हम टाइम पे आते हैं, और सेम चीज डायग्नोस्टिक स्पेस में भी हो रहा है कि हमारी लैब रिपोर्ट भी अच्छी होती है, हम सबसे फास्ट काम करते हैं, हमारे फ्लेबोटोमिस्ट वेल ट्रेंड है. अगर Hmm. मैं बार बार यही बोलूं कि हम सबसे सस्ते, हमसे सबसे सस्ते हैं ना, तो कल तो उसको कोई और सस्ता मिलेगा, कोई मासायोशी सोन आके पैसा डालेगा, और कस्टमर वहां पे चला जाएगा. वो कस्टमर को मेरे को रिटेन करना भी नहीं है. ऐसे Hmm. मुझे वैल्यू पे बनाना है. आज आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो, आप अमेजोन पे सिर्फ उसकी कस्टमर सर्विस के लिए शॉपिंग करते हो. Hmm. आज मैं जाके एडिडास से डायरेक्टली कपड़ा खरीद सकता हूँ, और उसकी वेबसाइट पे भी जाके मैंने खरीदा भी है, और रिटर्न प्रोसेस इज हॉरेंडस. Hmm. बट हावेवर
इफ यू वांट टू डू इट ऑन मिंत्रा यू वुड लव इट, क्योंकि मेरे को पता है मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, मेरा रिटर्न 2 दिन के अंदर उठा भी लेगा, मेरे नो क्वेश्चंस आस्क पॉलिसी है, यू आर देयर फॉर सर्विस। अब मैं प्राइस, हम अभी प्राइस के लिए इतना, ऑब्वियसली यू गो समटाइम्स फॉर डिस्काउंट्स वगैरह, प्राइस मैटर्स, बट सर्विस ओवर रूल्स। Amazon, I don't मतलब I don't think we've stopped comparing कि फ्लिपकार्ट के क्या भाव है, इधर क्या भाव है, unless and until it's a very high value purchase, कि टीवी खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, तो ट्रस्ट आई थिंक विल कम फ्रॉम कस्टमर सर्विस, व्हाट वैल्यू आर यू गिविंग टू। अब तक क्या था ना, सब कुछ डिस्काउंट 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 था, बट अभी सब फोकस कर रहे कि वैल्यू कैसे देंगे, एंड देयर इज नो क्लियर विनर प्लेयर इन द मार्केट राइट नाउ। नेटमेट्स को रिलायंस ने अक्वायर कर बैठा है, 1mg को टाटा ने अक्वायर कर बैठा है, Pharmeasy is the lone standing player who has themselves acquired Thyrocare. Okay. Or pretty large in themselves. A lot of money is riding on them right now. Then there is Apollo Group. तो Apollo 24/7, Apollo का अपना खुद का चल रहा है. But there's no clear cut player. I think everybody is fighting for that value proposition अपना develop करके कि हम we have the best doctors, we have the best medicines का range, we have the best service, everything, everyone wants to follow. Nobody has become Amazon of pharma or medicine. So I think everybody wants to become that. वो नहीं बन पा रहा है. Interesting. Because I always thought it in a way कि there's a Zomato, Swiggy for food, there is Amazon, Flipkart for commerce, but there is 1mg Pharmeasy for medicine. So that's what we have used. But that's a very great insight that अभी भी वो growth आनी बाकी है. So how do you see, what are your insights on this market other than that we wanted to give value, but they were looking for discount earlier, और एक market saturate हो गया अभी उस level पे आके कि discounts वाली चीज पे कोई भी play नहीं करना चाहता है. How this what are few insights on the users which are shopping on Pharmeasy, what they are looking for exactly? This is one, and second, how this industry is shaping up according to you for the future. What is going to come? What are the few things which we can witness? बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऐसे यू आस्क दिस कि यूजर क्या चाह रहा है. यूजर माइक्रो ट्रांजैक्शंस में ना पैसा बचाना चाहता है. अगर वो माइक्रो ट्रांजैक्शंस, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स का 1 2 3 ट्रांजैक्शन पहले 2 3 4 ट्रांजैक्शन हो रहे होते हैं उस प्लेटफॉर्म के साथ में, तो वो चाह रहा होता है कि मेरे को तो सस्ते में जो देगा मैं उसके पास जाके लेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म रिलेशन ही नहीं बन रहा है तुम्हारा. करेक्ट. ठीक है, तो तुम देखते हो कि सस्ता कौन दे रहा है शुरू में, और वो ट्रस्ट बिल्ड करने को टाइम लगता है. आई थिंक व्हाट एवरीबॉडी और पूरा इकोसिस्टम व्हाट वी आर फेलिंग ना टू डू इज, कोई भी ना हेल्थ केयर नहीं सोच रहा है. हेल्थ केयर कोई केयर नहीं कर रहा है उनके कस्टमर्स की हेल्थ की 360 डिग्री. I was talking to a couple of PMs at Pharmeasy also. We were preparing a DGFM roadmap and we were just thinking कि यार एक पूरा 360 डिग्री ना हम बहुत ट्रांजैक्शनल सोचते हैं कि फार्मा का धंधा कैसे बढ़ा देंगे, कि डायग्नोस्टिक्स का धंधा कैसे बढ़ा देंगे, रिपीट का क्रॉस-सेल का कोहर्ट कैसे लेके आ जाएंगे, रिपीट को कैसे दिखा देंगे, और बहुत एडवर्टाइजमेंट वाला मेथड कि यहाँ पे बैनर चिटका दो, यहाँ पे डिस्काउंट दे दो, 2 के लिए डिस्काउंट दे दो, 3 के लिए डिस्काउंट दे दो, 30% दे दो, 35% दे दो. ये कस्टमर्स टिकते हैं एज आई टोल्ड यू. और नोबडी इज थिंकिंग 360 डिग्री हेल्थ. एक प्लेटफॉर्म तू बता दे, फॉर एग्जांपल यू हैव एप्पल वॉच राइट, वी हैव एप्पल प्रोडक्ट्स. एप्पल तो ही ना बोलते कि मैकबुक लिए तो मैं तेरे को आईफोन डिस्काउंट में देगा ना घड़ी डिस्काउंट में देगा. यू आर हियर फॉर इकोसिस्टम. करेक्ट. हेल्थ वाला इकोसिस्टम ना कि मेरे सारे पेशेंट्स एक जगह पे है, मुझे मेरे इंश्योरेंस भी एक प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, मेरे डॉक्टर्स मेरे को एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, मैं दवाई भी वहीं से कर सकता हूँ, मेरा खून टेस्टिंग भी होता है, और रेट्रोस्पेक्टिवली पूरा मेरा डेटा ऑफ हेल्थ कि मेरा ब्लड शुगर इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, फिर इतना था, वो डेटा एक जगह पे, वन व्यू ऑफ दैट कस्टमर या वन हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म ना, वो कोई पिक्चर बना नहीं पा रहा है. ओके, when I was at 1mg we also tried to do a lot क्या, बट ये जो फंडिंग वाली गेम होती है या ग्रोथ वाली गेम होती है ना, ये उसको डिफाई कर देती है. नो बडी बहुत शुरू करते हैं लोग कि हाँ हम हेल्थ केयर विल केयर, ठीक है, बट वी इवेंचुअली गेट इनटू दैट रैट रेस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ग्रोथ, नंबर्स. I think we lose that. अगर I think everybody brings their focus to caring about the customer, or creating one view, one platform for their customers. I know a couple of small players in diagnostics business who are doing something really good. Healthians and Orange Health है,
So these guys are trying to do, but they don't have that ecosystem. Then pharma नहीं है उनके पास, doctors नहीं, ये सब नहीं है. So they lack. Potentially they will get acquired by somebody. But ये कोई इकोसिस्टम नहीं सोच रहा है एप्पल की तरह कि आज आप घड़ी भी पहनते हो, आपका लैपटॉप भी अनलॉक होता है उससे, आपका कैमरे पे फोन भी चल रहा है, which is working really fine. And you know, this is the ecosystem, and this is creates stickiness on the platform. That stickiness का value prop कोई लेके नहीं आ पाया. Everybody is just transactional. Relationship नहीं बना है. Again, I'm bringing that back to transactions versus relations, right? Closing the loop. Nice. I think I agree. This ecosystem part is not there. People are doing in silos, and because of the one big player do not have a hold across the country of one particular service. Either everyone has to start thinking of their ecosystem and they have to deliver ecosystems. Like 1MG has to do it on their own, or Pharmeasy have to do it on their own, but they are still yet to figure this out, as you are talking about. I think very interesting angle. I honestly don't know where this will go eventually, but people are not thinking about the health they should be, and there are a lot of government. I heard one scheme government is launching unified healthcare or unified health platforms, so that every data will be at one location. Correct. And it will be more simpler. So I'm hoping that would change a lot of things, or how people have how the healthcare practitioners have the relevant data to treat these patients, and they will be able to do in a personalized way the continuation of care. That's what will solve a large problem, and in a ecosystem way. बिकॉज सब वहीं से होगा, फिर उसी सिस्टम के थ्रू टेस्ट भी होगा, मेडिसिन भी जाएगा, रेगुलेशन से ही सॉल्व होगा ये. क्योंकि जब गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आएगी, बोलेगी कि यूनिवर्सल हेल्थ स्टैक बनना चाहिए, सारा डेटा इधर पास होना चाहिए, ओनली देन बाय फोर्स होगा. क्योंकि आज की तारीख में इन्वेस्टर का पैसा जब कंपनी में लगा है, तो सब धंधा 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 ही सोच रहे हैं. नोबडी कैन थिंक ऑफ दैट ओवरऑल इकोसिस्टम राइट नाउ. Correct. But I wanted to switch from a serious conversations to a fun conversation. And here is our time for the rapid fire. Any newsletter you follow? HBR. Okay. Yes. And also Ken has really good articles. I think I have learned it from you only. I think Ken writes really good, insightful news. I think they write masala also, but the way they cover industry, it's very good. It's very good, actually. I personally enjoy their writings. Yes. So though you are yourself a product leader, but one product leader you follow whom you learn a lot from. There's no particular product leader that I follow, but I'm quite inspired by how Steve Jobs led at Apple, and potentially how Kunal Shah, created such a huge brand out of cred. One YouTube channel you follow? There is a channel called AVTV. I think everybody should watch. AVTV, what they do is they look at certain business, and they analyze the business or a topic or something, and they present it visually very nicely to you. Okay. Obviously, other than this channel. Okay. Humans of product. Yeah. One movie recommendation you have for all the entrepreneurs, aspiring PMs? I have The Social Network. Okay. The story of Facebook, basically. And also I would recommend one series, Adam Newman ka We Work. Series. Yeah. How he manifested that entire idea. Whatever came into his thought, thinking out of the box, selling it. Yeah. And that passion, passion of getting things done. Karke chahiye mere ko. Yeah. You will learn that a lot from Adam Newman. Agreed. I think I have seen that on Apple TV, and I think it's brilliant on basis of your recommendation only. So great. 3 companies you look up to and you want to work at.
One, I think number one would be Figma, but Figma got acquired by Adobe, I think, recently. So I don't know, but yeah, they have built such a wonderful, beautiful product. Okay. Second would be maybe Spotify. Spotify has a beautiful product again, Got it. and third would be, I think, I don't know, maybe something in virtual headspace division at Apple. I think Okay. there is something Kodu thing happening over there in the Okay. metaverse, all those spaces. I think something great would be happening there. And Apple, obviously, I am an Apple user, big fan, so I would want to be there. I think they have a potential to crack the next big. They just don't want to be the Me Too guys. They want to crack it for the Very masters. interesting. Very interesting. So now the interesting question coming your way is, now you have an option to accept the offer, basically join. You have to decline, and one you have to put on the hold. And out of these three only, so Figma, Mhm. Apple, and Spotify. Figma is not acquired by Adobe. Okay. Okay. So my first answer would be Figma. Okay. 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 Because I think they worked with a clean slate. They just went out, all Hmm. out, and built Hmm. the product. Hmm. On hold would be Spotify, because I would say reject would be Spotify. Hmm. Okay. Hmm. Let me change my answer, yeah, man. Please, this is extremely difficult, yeah. The metaverse space is okay. So I would reject Spotify. Okay. 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 And I would put Apple on hold. Okay. Uh, for now, maybe potentially, because the metaverse ecospace or the heads मतलब वाला जो ecospace है ecosystem है, I think it has some time to mature. Hmm. Okay. Hmm. And given Figma is a smaller organization, Apple is a more bureaucratic, larger organization. That is why I'm taking the decision of going with Figma and not with Apple at this point. Got it. Got it. I think amazing. Beautiful answer. I'm going to sum up the rapid fire over here. It's very interesting. I learned so many resources and way your thought process to choose my next company, maybe if I'm going for that. So it was great. I loved having this session with you. I want to summarize. I want to basically uh, pass on the gratitude back to a lot of folks involved in our life and shaping this career. So, whom do you want to say thank you for your career? I would still give credit to my first boss. His name was DJ in the very first company, and he was ruthless. Only he taught me ruthlessness. Okay, and he used to pester me and teach me how to work. Baki, I would see that there have been a lot of mentors across, and everybody has pushed me to the next level. Akshay, there was one boss from Geo. His name was Akshay. Is Akshay? Met him 2 days back only. We are good friends now. So he pushed me. Hmm. कि तू and उनका ऐसा था कि तू है बेस्ट है बिलीव इन दैट तू बेस्ट है. Hmm. He used to call me champ. Although I was not a champ, but he created that illusion around me and pushed me. Hmm. However, I would also want to thank to all the people who have rejected me, who have Hmm. said no to me, Hmm. who have not given me the role that I asked for at that particular time. A Hmm. lot of people have rejected me. I would say thanks to them, because if they had not rejected me, maybe I would have been stuck somewhere. Yeah. Okay. But my career has taken a particular trajectory because they have said no and I have moved on. And I've become more, say, Sakta Londa, because they have said no so many times. Right. 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 Thank you so much, Salman, uh, for this one. And how PMs can reach back to you if they are looking for any advice from you? I, I think anyone and everybody can connect with me on LinkedIn. My LinkedIn, pretty much an open profile. My can drop me a message over there on LinkedIn, and also I think you can provide my email address to folks. Potentially, they can So just reach obviously, out. if anyone is reaching to Salman on LinkedIn by telling that they have watched this video, Salman will be all up for it. He will be like, Yes. okay, now you are already watched this and you're coming, so you already have gathered this much of insights at least, and we can talk more on top of it. So thank you, Salman, for spending so much time with us today.
I really learned so many things from how you think about shaping the career. I can't say this enough that I have worked with you in the past. I want to work with you in the future also. And it's great to see you, to talk to you, to meet you again and again. Uh, let world discover this great piece of content, great piece of advices, and see where they can it can help them, help all of them to in the future. Great, guys. Absolutely. So if you are watching this, Absolute pleasure, Himanshu. Thank you for having me on this platform. I was so willing to come on this platform. I still hold a grudge that I was not the first video that you posted on this platform. I was just running the. I was testing the waters for you. Actually, I wanted to come prepared because I know otherwise you will be say, Himanshu, what Himanshu? You have not even done this. How come you are preparing this product? How come you are not ready? How you have not thought about this? Where is the PRD? So I wanted to be prepared for that. I No, think no, great. I had a It lovely has been a time. great chat, great Yeah. conversation, and Sunday well spent with you, man. Same. I feel the same. So, guys, if you're watching this and you go keep watching a great content on how to become a product manager, how people are shaping themselves, do subscribe and like hit us or tell us something what we can improve in the comments below. Thank you. Bye bye. Thank you, everyone. Bye bye.